नमस्कार आम विशेष कार्यक्रम अम्फान सुपर साइक्लोन को स्वागत करुच्ची मु गायत्री। बात्यार रूप धीरे धीरे सामना को आसूची। आईएमडी रो सूचना अनुसार बात्या अम्फान एवं सुपर साइक्लोन रो रूप नहीं सारी बारंबार आप देखिए प्रति घंटे 2 घंटा अंतर रे हमको रिपोर्ट अपडेट आसूची। ए रिपोर्ट अनुसार जिते सुपर साइक्लोन रूप नहीं सारी अम्फान यह समय राज्य सरकार प्रस्तुति आरंभ कर कारण जहाँ सूचना रोचे पारादीप ठारे 780 किलोमीटर दूर रही बात्या से पश्चिमबंग दीघार दक्षिण पूर्व में 940 किलोमीटर दूर रही धीरे धीरे यह आगोची समुद्र कूल बर्तमान समुद्र भितर यार रही पोजिशन जे देखिए समुद्र भितर रही किंतु कहुच्छी 20 तारीख दिन अपराह्न संध्या समय यार लैंडफॉल हम तापर जिते से उपकूलवर्ती अंचल आड़ को मुहाइब जो प्रभाव रही प्रभाव को नहीं सरकार पूरापूरी प्रस्तुत अच्छा खास कर कहुच्छी 20 तारीख अपराह्न कि संध्यारे यह स्थलभाग छुब यार प्रभाव में आज संध्यार विभिन्न स्थान में वर्षा आरंभ हो। ओडिशा कथा देखा ओडिशार गंजाम गजपति पुरी कहतु जगतसिंहपुर कथा कहतु केन्द्रापड़ा कथा कहतु प्रथम पर्यायर आज संध्यार ही वर्षा आरंभ हो। छड़ा कहे यही समय लोकों को स्थानांतर कर प्रक्रिया आज संध्यार आरंभ हो कारण जो जो स्थान यार प्रभाव रही सब स्थान में जिलापाल को अलर्ट कर बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केन्दुझर खोर्धा और पुरी जिलार केतक स्थान में प्रबल वर्षा सांग को कहुच्छी किसी स्थान में अति प्रबल वर्षा होबार आशंका रही अति प्रबल वर्षा होबार आशंका रही। ओडिशार समस्त बंदर में 2 नंबर विपद संकेत जारी करा जायछि। तेणु सुपर साइक्लोन रूप नहीं सारी बर्तमान जे देखा अम्फान आईएमडी सूचना दे सारी जो मैंने कहुला कि लोकों को स्थानांतर करा तेणु क्वारंटाइन केन्द्र जो नेगेटिव लोक अच्छा एसआरसी सूचना देते घर को पठाଯିव कूल डंगा को भल भाव बांधि रखा आज एसआरसी सूचना देते क्वारंटाइन दरकार पड़े 11 लाख लोकों प्रस्तुति करा जायछि। राज्य सरकार पूरापूरी प्रस्तुत रही जदि यार प्रभाव अधिक रहे ताले 11 लाख लोकों को स्थानांतर करा 542 बात्या आश्रयस्थली रही सबु प्रकार मुकाबला सहित बंदर गुड़िक प्रति सतर्क नजर रखा सहित संकेत जारी करमती आप देखिए कि बर्तमान ओडिशार समस्त बंदर में 2 नंबर विपद संकेत जारी कर मत्स्यजीवी को सतर्क सूचना जारी कर कारण आज ही वर्षा आरंभ हो जार प्रभाव अम्फान प्रभाव जो वर्षा आरंभ हो भद्रक मयूरभंज केन्दुझर खोर्धा और पुरी ये सबू किसी स्थान में प्रबल वर्षा हम। अम्फान दिग जदि आम देखा पोजिशन जे देखा दक्षिण बंगोपसागर पारादीप ठारू यह 780 किलोमीटर दूर रही पश्चिमबंग दीघार 940 किलोमीटर दूर रही दिग परिवर्तन कर संभावना यथेष्ट रोचे विशेषज्ञ मैंने आकलन कर कारण सुपर साइक्लोन जदि दिग परिवर्तन कर हाथिया मध्य लैंडफॉल कर वर्तमान समय यार प्रभाव में कहुच्छी हाथिया किंबा पश्चिमबंग दीघा ये मझे लैंडफॉल करें तेणु 20 तारीख अपराह्न कि संध्यार यह स्थलभाग छुईब तापर जो इंटेंसिटी जो रही बर्तमान समय धीरे धीरे कम हम से अनुमान कर तेज एसआरसी कौन कहते कारण आप देखिए कि प्रेसमिट करते किसी सूचना से देते इनफर्मेशन देते कि मुकाबला रही सरकार प्रस्तुति रही से संपर्क सूचना देते आसतु नजर पकईदेवा से कौन कही अम्फान दिग को नहीं अधिक आम आलोचना करवा जो अंचल में आवश्यक पड़ो आम जो कथा कहुई कच्चा घर चाल घर आजबेस्टस घर टाइल घर जदि थी कौटी एवं जीसीआई सेट्र घर जो थी से घर गुड़ी लोक मान नियरेस्ट सेफ सेल्टर जो अच्छी से स्थानांतर करा क्वारंटाइन सेंटर गुड़िक जो मैंने नेगेटिव टेस्टिंग है कि नेगेटिव होती से जदि पक्का घर थी ताले से घर को छाड़िया व्यवस्था करा सो दैट आम ऑलरेडी जगतसिंहपुर जिला किसी साइक्लोन शेल्टर को कंप्लीटली इवाकुएसन कर सारी कोविड लोक मान को नेगेटिव लोकों को घर को पठे देछि अन्य मानक री अरेंज कर सबू जिला से भली काम कर तेणु आमर स्थानांतरण कार्यक्रम मुख्यतः आसंता काली विशेष भाव हम आज जदिव प्रक्रिया किसी जिले में आरंभ करेंगे आम जिला मानक गतकाली सुधा 25टी ओड्राफ आउ एनडीआरएफ टीम पठेइथिलु 10टी एनडीआरएफ टीम 15टी ओड्राफ टीम पठेइथिलु आज सकाळु आउ 2टी ओड्राफ टीम आम बर्तमान पठेइछु तार एक्जाक्ट पोजिशन होछि बालेश्वर जिला को आम गतकाली सुधा 5 टीम पठेइथिलु आज आम सेठी आउ गोटे पठाऊँ 6टी टीम भद्रक को
गतकाली सुधा 4टी टीम पठेइलु आज आउ गोटे टीम सेठी पठाउछु फायर सर्विस एडिशनल टीम 30टा बाहर मोबिलाइज कराई 4टी जिला एवं आउ किछि फायर सर्विस टीम को रेडी करी रखाई अन्य जोटी दरकार पड़ो इमिडिएटली पठाइबा पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं जल संपद विभाग जो एग्जीक्यूटिव मैंने अच्छा जिलापाल मैंने सहित आलोचना करी प्रति जिले में 10 ରୁ 20टी टीम से मैंने प्रोक्लेन डोजर जेसीबी मेसीन सहित लेबर रेडी करी बर्तमान रखी लेबर शक्ति मंत्री गोटे रिव्यू करते से नेस्को एवं सेसुर विशेष भाव में योजना करिसेंती मैन पावर कंट्राक्टर गैंग से बर्तमान प्री प्लेसमेंट करुँचे जी इक्विपमेंट पाखे अच्छी फॉर्चुनेटली बर्तमान जहाँ इक्विपमेंट अच्छी से आम इमिडिएट रिस्टोरेशन काम आरंभ कर कौन असुविधा हम नहीं तेणु से संपर्क में समस्त प्रकार पदक्षेप नौकरी तेज शुणुले एसआरसी कथा शुणुले तेज आज प्रधानमंत्री संपर्क में आलोचना कर सारी आप देखिए कि जातीय विपर्य परिचालना कर्तृपक्ष ताछड़ा गृह मंत्रालय सहित प्रधानमंत्री आलोचना कर कौ पोजिशन में रही जेहेतु यार प्रभाव अधिक रही आलोचना कर तेणु पश्चिमबंग बा ओडिशा रे आर स्थिति कौन रही संपर्क से आलोचना करते आ जहाँ कहुला कि एनडीआरएफ टीम जी बर्तमान रही 10टी टीम आसी सारी आउ 2टी टीम अधिक आगु को काम कर ओडिशा क्षेत्र जदि आम आलोचना करवा तेणु प्रधानमंत्री समीक्षा करने सहित राज्य सरकार प्रस्तुति रही आप देखुं कि समय पूर्व दिन 4टा जो समय दी जाता है कहला कि प्रधानमंत्री आलोचना करेंगे और पूरा स्थिति जानवे कारण विभिन्न स्थान उद्धारकारी दल केते दूर पहुंची किभली से प्रस्तुत रही आर प्रभाव पोजिशन किभली रते लोक स्थानांतर करा पूरा चित्र को नहीं बर्तमान प्रधानमंत्री बा किसान पूर्व प्रधानमंत्री आपको नहीं आलोचना करले समीक्षा करले तार दृश्य आप देखते तेज बात्यार स्थिति कथा आम लगातार आलोचना करले ओडिशा रे कहुच्छी कि जो उपकूलवर्ती अंचल में बात्या अतिक्रम कर 110 ରୁ 135 रहिबो तार स्पीड जदि विंड स्पीड कथा कहबा अपडेट अनुसार जदि किसी समय पूर्व यार 780 किलोमीटर दूर थिला पारादीप ठारू बर्तमान किंतु अपडेट अनुसार 770 किलोमीटर दूर रही पारादीप ठारू ताछड़ा से देखिए कि दीघा ठारू 920 किलोमीटर दूर अच्छी जदि आम आलोचना करवा धीरे धीरे से पाखे आसुची समुद्र भितर रही किंतु ए इंटेंसिटी से मेंटेन कर काली सकाळ 5:30 पर्यंत इंटेंसिटी मेंटेन हम तापर देखिए कि लैंडफॉल रे इंटेंसिटी कम होवार संभावना रही जहाँ आलोचना करछि किंतु आज ठारू ही वर्षा आरंभ हम एथिपई एनडीआरएफ टीम कथा कहतु ओड्राफ टीम कथा कहतु समस्ते प्रस्तुत अच्छा एनडीआरएफ टीम बाहरी सारी विभूति अच्छा बर्तमान से संपर्क में आलोचना करवा पूरा प्रस्तुति किभଳି अछि विभूति प्रधानमंत्री आलोचना कर सारी समीक्षा कर सारी बात्या प्रस्तुति को नहीं आप देखिए जातीय विपर्य परिचालना कर्तृपक्ष सहित गृह मंत्रालय सहित ता छड़ा पूरा पोजिशन करने नहीं आलोचना कर विभूति कौन अपडेट मिल संपर्क में देखो एनडीएमआर कथा कहतु जातीय विपर्य परिचालना ऑफिसर मानकर पदाधिकारी मानकर कथा कहतु इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कथा कहतु स्वराष्ट्र मंत्रालय कथा कहतु एवं जोटा कह जाए नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी कथा कहतु समस्त पदाधिकारी को नहीं समीक्षा बैठक करा जायछि एवं समस्त प्रस्तुति रही राज्य सरकार जेते शीघ्र जहाँ चाहिए समस्त प्रकार साहाय्य सहयोग तत्क्षण जोगाई दिया प्रस्तुति होइछि एवं जहाँ वर्तमान रही प्रधानमंत्री को मध्य अवगत करा जायछि जे आसाम सिक्किम मेघालय कथा मध्य अवगत करा जायछि एवं वेस्ट बेंगल रे प्राय 96,000 लोक जहाँ कही प्रभावित होगा रही से संपर्क में मध्य इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अवगत कराई तेणु एनडीएमए को आहुरी रैपिडली काम करने किभली अधिक टीम वेस्ट बेंगल पठाଯିव से समस्त प्रक्रिया आरंभ हो सारी सेपटे ओडिशा जदि चाहिए ओडिशा को मध्य अधिक टीम पठाଯିव समस्त प्रस्तुति रही जहाँ साहाय्य सहयोग दरकार राज्य सरकार को तत्क्षण जोगाई दिया गायत्री बहुत बहुत धन्यवाद विभूति थे जहाँ से कहते कि एनडीआरएफ टीम कथा जो देखिए ओडिशा को 10टी टीम आसी आउ 2टी टीम प्रस्तुत रही किंतु जदि अधिक दरकार हुए ताले अधिक संख्यार टीम पहुंचे सब प्रकार सहयोग करेंगे प्रधानमंत्री बर्तमान ये समीक्षा बैठक में आलोचना करते तेज बर्तमान समय आम देखा जदि पोजिशन कौन रही सुपर साइक्लोन जदि कैटेगोरी देखिए 219 जो बेग रिंड स्पीड से सुपर साइक्लोन कैटेगोरी यार तेणु बर्तमान समय कहुच्छी आईएमडी तरफ जो सूचना दी जाइए बात्या अम्फान एवं सुपर साइक्लोन रूप नहीं सारी मुकाबला करने उपकूल जिले में आज अपराह लोक स्थानांतर कर सूचना रही एसआरसी सूचना दूसरे आज ही स्थानांतर कारण दरकार पड़े अधिक संख्यार लोक
स्थानांतर करा सरकार प्रस्तुत अच्छा सबू विभाग को सजग रखा आप देखिए पानीय जल कथा कहतु विद्युत विभाग कथा कहतु समस्ते सजग एथपाई अच्छा कारण हुए तो विंड स्पीड बढ़ी पारे यार प्रभाव जो भाव आकलन कर अधिक प्रभाव रही पारे तेणु गतिपथ परिवर्तन कर उदाहरण रही उदाहरण हो पारे कहला जो मैंने पाणीपाग विशेषज्ञ से आकलन करते जदि सुपर साइक्लोन ताहले यार गतिपथ केतेबेले भी परिवर्तन करें तेणु गोटे स्पष्ट चित्र मिल न पारे किंतु बारंबार तापरे मॉनिटरिंग करा 3 घंटा पर्यंत आप देखिए तापर गतिपथ परिवर्तन किसी समय पूर्व 780 किलोमीटर दूर था पारादीप ठारू बर्तमान जहाँ सूचना रही 770 किलोमीटर दूर रही पारादीप ठारू 920 किलोमीटर दूर रही दीघा ठारू लैंडफॉल जहाँ बारंबार आलोचना कर लैंडफॉल हम बांग्लादेश कथा कहतु जदि देखा कि पश्चिम बंग कथा कहतु ये दुईटी अंचल जो देखा कि एरिया जो रही दीघा ता छड़ा देखिए हाथिया यार मध्यस्थल लैंडफॉल हम तेणु ओडिशा उपरे जदियो सीधा सड़क गोटे प्रभाव रही किंतु कहुच्छे आम कहीपर कि आदौ प्रभाव रही उपकूलवर्ती अंचल यार प्रभाव रही वर्षा सहित पवन बढ़ ए संपर्क में आम लगातार आलोचना करते आईएमडी डीजी अच्छा मृत्युंजय महापात्र प्रेसमिट अच्छा सीधा सड़क नहीं से कौन सूचना दौरान देखा Till now, the cyclone Amphan is the 64th name, and it is going to start with a new name after Cyclone Amphan. Now, Cyclone Amphan has intensified during past 24 hours very rapidly. It became a cyclone storm in the evening of 16th of May, and in the noon of today, it became a super cyclonic storm. And this is the second super cyclone storm after the Odisha super cyclone of 1999 over the Bay of Bengal. If you remember, in the Odisha super cyclone, it is historically the most intense cyclone so far. But this particular cyclone Amphan at present has got the wind speed of 220 to 230 kilometers per hour, rotating around its center. It will maintain its supercyclone intensity for next 24 hours. It is a very large scale cyclone. I will say a size of 700 kilometers. It extends up to 15 kilometers in height. So we are expecting that it will cross West Bengal and Bangladesh coast between Digha in West Bengal and Hatia Island in Bangladesh. At the time of landfall, it will be a very extremely severe cyclone storm. It will have the wind speed of 165 to 175 kilometers per hour, gusting to 195 kilometers per hour. This type of wind is very disastrous. It can cause large-scale damage to the structures. It can cause uprooting of big trees. It can cause bending and uprooting of electric poles and telephone lines. It can damage all thatched houses, widespread damage to thatched houses. In old Pakka buildings also can be damaged with these winds. So therefore, it is completely unsafe. Also, we are expecting heavy to extremely heavy rainfall over these West Bengal districts. The tidal wave, which is called as killer of the cyclone, is expected to be about 4 to 6 meters above the astronomical tide. I will tell you, this West Bengal coast is very shallow in nature. So usual tidal wave goes much inland. And the tidal wave in association with this cyclone can go up to about 25 kilometers along the rivers in the 24 Pargana districts, South and North 24 Pargana districts. So therefore, all the adverse weather are expected in South and North 24 Pargana, Medinipur district, and also Hubli,
Kolkata, Howrah districts. So state government is taking action. Evacuation is necessary from the low-lying areas. I want to make it very clear. It is a very intense tropical cyclone, extremely intense cyclone. When it will hit the coast of West Bengal and adjoining areas of Bangladesh, we are expecting worst hit over South and North 24 Pargana and West and East Medinapur districts. It will also have the damaging impact over North coastal Odisha districts. As we told, it will cross the coast on 20th afternoon or evening. Prior to that, it will be moving parallel but close to Odisha coast. So therefore, North coastal Odisha districts like Jagatsinghpur, Kendrapada, Bhadrak, Balasore also will have very strong winds. Our expectation is that wind speed can be 110 to 120 kilometers per hour, gusting to 135 kilometers per hour in these north coastal Odisha districts. Whereas in coastal West Bengal districts like Medinipur, South and North 24 Pargana, wind speed will be 165 to 175, gusting to 195 kilometers per hour. From 20th afternoon, this maximum wind will be there up to 20th night. Even Kolkata can experience wind speed of 110 to 120 kilometers per hour. So I am getting some questions. Siddharth ji is asking about which area will be hit by this cyclone. मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, सबसे ज्यादा इंपैक्ट वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना, वेस्ट एंड ईस्ट मेदिनीपुर, इसके बाद कलकत्ता, हावड़ा, हुगली डिस्ट्रिक्ट्स में होगा और ये इंपैक्ट 20th को ही ज्यादा होगा। रेनफॉल 19th को शुरू होगा, विंड स्पीड भी 19 को शुरू होगा 55 टू 65 किलोमीटर पर आवर और धीरे धीरे बढ़ के जब साइक्लोन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट को पार करेगा दीघा और हतिया आइलैंड के बीच, तब सबसे ज्यादा विंड स्पीड 165 किलोमीटर पर आवर से 175 किलोमीटर पर आवर और गस्टीनेस में ओकेजनली विंड स्पीड कैन गो अप टू 195 किलोमीटर पर आवर। और इसका इम्पैक्ट इससे पहले उड़ीसा में शुरू हो जाएगा। उड़ीसा भी हिट होगा मगर डायरेक्ट हिट नहीं होगा क्योंकि इसका जो ट्रैक है उड़ीसा कोस्ट की पैरेलल जा रहे हैं, डायरेक्ट हिट नहीं हो रहा है। मगर जो साइक्लोन का जो कोर विंड स्पीड है वो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के ऊपर ज्यादा रहेगा। आज रात से कोस्टल उड़ीसा के पास जो समुद्र है, तट एरिया है, उसमें विंड स्पीड बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ के ये 110 टू 120 गस्टनेस में 130 kmph हो सकता है नॉर्थ कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स। सो जब साइक्लोन आता है 3 तरीका का डैमेजिंग वेदर होता है। जैसे हमने बताया सबसे डैमेजिंग वेदर हो गया कि आपका टाइडल वेव जिसमें सलाइन वाटर आता है और ये सलाइन वाटर से क्या होता है कि जो हमारा सॉयल है वो सलाइन हो जाता है, जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो सब डैमेज्ड हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर भी अफेक्टेड होता है और ये सलाइन वाटर जो टाइडल वेव वो ऑल ऑफ ए सडन आता है। सो पहले आप नहीं गए होंगे तो जब साइक्लोन का विंड शुरू हो गया तब स्टॉर्म सर्ज आ रहे हैं और टाइडल वेव आ रहे हैं तब आप नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है लोगों को, सरकार की तरफ से भी ये पदक्षेप लिया जा रहा है कि आप तुरंत सरकार के आदेश के अनुसार सेफ शेल्टर या सेफ प्लेस को चले जाना चाहिए और कोई गुजब में विश्वास मत करिए। और मैं एक बात बोल के रखूं,
साइक्लोन एक मल्टी हजार्ड है। इसमें एक ही साथ आपको हेवी रेनफॉल मिलता है, स्ट्रॉन्ग विंड मिलता है, और इसके साथ भी आपको टाइडल वेव मिलता है। सो तीनों मिलने के साथ ये मल्टी हजार्ड सिनेरियो हो जाता है। विंड से स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, टाइडल वेव से इनंडेशन होता है, सैलाइन इनंडेशन, और हेवी रेन से भी लो लाइंग एरिया में इनंडेशन हो जाता है और सॉइल लूज हो जाता है। इसलिए जो थेचेड हाउसेस है, कच्चा घर है, वो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मैं और एक क्वेश्चन देख रहा हूं कि ऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर इक्वली डेंजरस। नहीं, सभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वली डेंजरस नहीं होते हैं। इसका एसोसिएटेड विंड के हिसाब से और इसका डैमेजिंग पोटेंशियल के हिसाब से साइक्लोन्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंडिया में हम साइक्लोन को साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। जब कोई साइक्लोन का विंड स्पीड लगभग 60 किलोमीटर से 90 किलोमीटर, 60 to 90 किलोमीटर पर आवर के अंदर होता है, इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है। जब इसका विंड स्पीड 90 to 120 किलोमीटर के अंदर होता है, इसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है। जब 120 to 160 किलोमीटर के अंदर होता है, इसको वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। जब 160 से 220 किलोमीटर तक होता है, इसको एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। जब 220 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है, इसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। जैसे अम्फन एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, अभी इसका विंड स्पीड 220 से 230 किलोमीटर है, मगर जब कोस्ट को पार करेगा तो अभी एक्सट्रीमली सीवियर स्टॉर्म रहेगा, जबकि विंड स्पीड अप टू 195 किलोमीटर तक रहेगा। सो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि ये जो डैमेज एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म पे या वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म पे लार्ज स्केल होता है, लार्ज स्केल एक्सटेंसिव डैमेज होता है। इसीलिए इवैक्यूएशन जरूरत होता है जो एरिया में साइक्लोन जाता है। सो मैं और एक क्वेश्चन देख रहा हूं कि व्हिच आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन रिकॉर्ड। मैं जो स्टडी किया हूं, जो हमारा जो रिकॉर्ड है 1891 से हम रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं इंडिया में, ये नॉर्थ इंडियन ओशन के लिए। सो फार Odisha super cyclone 1999, which crossed Odisha coast near Paradip on 29 October 1999, is considered as the most intense and largest tropical cyclone in this area. The smallest cyclone which I have come across is the cyclone Agni. It developed during 28th to 30th October 2006. It was a very short-lived cyclone. It crossed near Tamil Nadu and adjoining Andhra coast. And it was a so small-scale cyclone that it could not be picked up by the satellite. Only because of our Doppler weather radar in Chennai and Karaikal, we could pick up this tropical cyclone Agni at that time. So I would consider the tropical cyclone Agni in 2006, which developed over Bay of Bengal and crossed near about Chennai and Nellore, is the smallest cyclone, and Odisha super cyclone of 1999 is the largest cyclone. मैं और एक क्वेश्चन देख रहा हूं, why are there fewer cyclones over Arabian Sea as compared to the Bay of Bengal? I just want to inform you that cyclone genesis depends upon various parameters. It depends on some parameters which are dependent upon the sea conditions, because cyclone develops over the sea mainly, and some atmospheric conditions. Mainly there are 6 conditions. One of the most important condition is the sea surface temperature or ocean thermal energy or ocean heat content. So आप बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को कंपेयर करें तो बे ऑफ बंगाल में हीट कंटेंट ज्यादा होते हैं और अरेबियन सी में हीट कंटेंट, स्पेशली वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरेबियन सी में
हीट कंटेंट कम होते हैं। दूसरा रीजन है कि जो साइक्लोन हमारे एरिया में डेवलप होता है, यूजुअली मेनी ऑफ देम वो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन यानी साउथ चाइना सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है, और वो जो रेमनांट्स आता है बे ऑफ बंगाल को जब आता है, यहाँ वार्म सी मिलता है और वहाँ इंटेंस होते हैं और फिर साइक्लोन हो जाता है। मगर बे ऑफ बंगाल को जो साइक्लोन डेवलप होता है वो जाकर अरेबियन सी में इंटेंसिफिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको पेनिनसुलर इंडिया की क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो इसीलिए ये रीजन के लिए भी बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन होता है और अरेबियन सी में कम साइक्लोन होता है। मैं और एक क्वेश्चन देख रहा हूँ कलाम मलिक साहब कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट द टाइम ऑफ लैंडफॉल। लैंडफॉल टाइम हम इंटेंसिटी बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, उनका लार्ज स्केल डैमेजिंग इंपैक्ट रहेगा वेस्ट बंगाल में और एडजॉइनिंग बांग्लादेश एरिया में, और इसके साथ ऑल्सो सम डैमेजिंग इंपैक्ट रहेगा नॉर्थ कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसका विंड स्पीड होगा 165 to 175 kmph, गस्टिंग टू 195 kmph। इसका इंटेंसिटी साथ और एक बड़ा बात यह है कि इसके साथ जो एसोसिएटेड स्टॉर्म सर्ज है, टाइडल वेव है, वो 4 to 6 मीटर से, आप इमेजिन कर पाएंगे कोई एक जो वॉल है हमारा, ये रफली 3 मीटर्स होता है। जब हम 4 to 6 मीटर्स का स्टॉर्म सर्ज बोल रहे हैं, टाइडल वेव बोल रहे हैं, दैट मीन्स एक 2 स्टोरीड बिल्डिंग का हाइट जैसा होता है, ऐसे ही सैलाइन वाटर लो लाइन एरिया को आएगा। सो इसलिए 1 स्टोरीड और 2 स्टोरीड जो बिल्डिंग हुए कोस्टल एरिया में वो सेफ नहीं है, और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो व्हाटएवर कच्चा हाउसेस होता है that can be extensively damaged. See, in addition to that, this can cause also widespread damage to structures. इसलिए बहुत इंटेंस साइक्लोन है। मैं और एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, प्लीज से एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द लैंडफॉल। हम बोल रहे हैं कि ये लैंडफॉल 20 तारीख को, आई एम टेलिंग दैट द लैंडफॉल विल हैपन on 20th afternoon or evening or afternoon to evening between Digha in West Bengal and Hatia Island in Bangladesh. And if you look at the most probable track, it is passing through the Sundarbans. So therefore, if you are interested to know theoretically where actually the eye will pass, this is the Sundarbans. But considering the size of a tropical cyclone, it is about 700 kilometers in this case, and considering the diameter of the central dense overcast cloud mass, which is the damaging cloud mass, which causes heavy rainfall, and that area is associated with the strongest winds, that is about 120 kilometers radius. So therefore, if it crosses there near Sundarban, it can have the impact over entire West Bengal districts and also over adjoining Bangladesh districts. Not only that, when it goes inland also, since it is passing through riverine areas, deltaic areas, it will have certain intensity up to Kolkata, Hooghly, Howrah districts. There also it will have strong wind speeds. Okay, I am finding another question. Will it have the same effect on Odisha as cyclone Phani did last year? No. Phani hit Odisha near Puri directly. And at that time, maximum wind was 170 to 180. In gustiness, it was 205 kilometers per hour. But in this case, the cyclone is not directly hitting Odisha. It is going parallel to Odisha coast and hitting West Bengal coast. So you can take a comparison. This cyclone is expected to follow the track like cyclone Bulbul in November 2019. So if you remember Bulbul, it came close to Odisha coast and it caused damaging impact over north coastal districts. Only difference is that this cyclone Amphan is stronger. Its wind speed is higher than the cyclone Bulbul. Therefore, we are giving little higher wind over Odisha compared to Bulbul cyclone what we gave. In case of Bulbul, we gave wind speed of 200 kilometers per hour for north coastal districts.
In this case, we are giving up to 135 kilometers per hour with gustiness. So from Kerala, will super cyclone Amphan has some effects as that of Odisha super cyclone? No. In case of Odisha super cyclone, it was having the wind speed of 260 to 280 kmph. It was stationary for about 30 hours near Paradip, Bhubaneswar and Cuttack. So therefore, it has the catastrophic damage. But in this case, we do not expect the cyclone to be stationary while causing the hit or while hitting the coast. It will move fast. And also, it is moving in a summer season as compared to Odisha super cyclone, which occurred in the post-monsoon season. Lot of moisture over the land. Soil was wet. In this case, soil was dry. So therefore, intensity of the cyclone is quite less compared to Odisha super cyclone. At the time of landfall also, it will be less further. But still, it has got the extensive damaging capacity because it will be extremely severe cyclones. Another question I am finding. So now it seems that question I just missed. Okay, which district of West Bengal will be worst affected by the cyclone? This is South and North 24 Pargana district will be worst affected, followed by West and East Medinapur district. And also we will have the effect on Hooghly, Howrah and Kolkata districts. Then there is another question. Sandeep, sorry, there are many questions, therefore I am not able to. So now it seems that it might affect the surge of monsoon 2020. Yeah, it has actually favored the monsoon over Nicobar Islands, but it will have some adverse impact about the monsoon onset over Kerala coast. So therefore, we have told our monsoon onset will be slightly delayed. Against the normal date of 1st June, we are expecting monsoon over Kerala on 5th June. Then please explain about the 6 parameters of the cyclogenesis. I was telling there are 6 parameters. 3 are dynamical parameters and 3 are thermodynamical parameters. I will tell you. Ocean thermal energy and sea surface temperature is the most important. If temperature is more than 26 degrees Celsius, it becomes favorable for cyclogenesis. If it is more, it becomes more favorable. The next one is that for cyclone development, you need some kind of instability in atmosphere that is that should be there to help the atmosphere to go off. So moist air should go off. You know the moist air is lighter than dry air, so it goes up. But if it's unstable, it goes more rapidly. And if there is warm sea surface temperature, then evaporation takes place, vaporization takes place quickly. So all this helps. The third one is that you should have higher relative humidity in middle tropospheric level, unlike the thunderstorms. In case of thunderstorms, we have the dry atmosphere in the middle troposphere. But in case of cyclone, you should have the moist atmosphere, at least relative humidity more than 60%. That helps to enhance the convective activity. Deep convective cloud can form, and hence it will lead to formation of tropical cyclones. Now, considering dynamical parameters, one of the important parameters is that the Coriolis force. Earth is rotating around its own axis. So because of this rotation, there is a force which is called as the Coriolis force. It is an apparent force which deflects the wind to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. So this Coriolis force helps to form the cyclones. But thing is that for formation of cyclone, you need the minimum Coriolis force. And that minimum Coriolis force is usually available to the north of 5 degree north. So therefore, usually cyclone develops to the north of 5 degree north. Very rarely develops to the south of 5 degree north and the equator. The next point is that you should have high rotating power of the atmosphere in the place. This is measured by a parameter called as vorticity. If in the lower troposphere, the atmosphere is able to rotate quickly, just like a top. In childhood, we play with the top, no? It rotates on its one axis. Therefore, if atmosphere can rotate like this, it leads to the development of convective clouds, and hence it helps the formation of the cyclones. The third one is that there should be low vertical wind shear. I will explain you wind shear. When you are traveling in a windy day, if you have got good hair,
you will find that your hair is getting distorted. Even if you have put off so much of coconut oil, you will find that your hair is getting distorted if there is a strong wind. So similarly, if you are carrying an umbrella, if there is strong wind, umbrella cannot stand straight. It gets diverted in the direction of wind. Similarly, in the atmosphere, if you have got a strong wind in the upper level and lower level in the comparison, then you will find that the cloud mass which is developing, that will be distorted to any direction of the winds. So this is called a shearing of the clouds. So once the cloud shears, it cannot remain straight. So its process of development gets distorted. And hence, this process is not favorable for development of the cyclones. So for cyclone development, you should have low vertical wind shear. Consider the case of cyclone Amphan, which has become now super cyclone. It happened because of this low vertical wind shear, because of the higher sea surface temperature and higher ocean heat and ocean thermal energy, and all other favorable factors are there for intensification. Okay, so now I am finding another question. Is it the second super cyclone after Paradip cyclone? Yes, it is the second super cyclone over Bay of Bengal, not over Andaman, not over entire North Indian Ocean. If you consider entire North Indian Ocean, after Odisha super cyclone, we have got 2-3 super cyclones over Arabian Sea. But over Bay of Bengal, this is the second super cyclone. So I am finding another question. Naming a super cyclone is based on intensity. Yes, if the wind speed exceeds 220 kilometers per hour, it is called as a super cyclonic storm. So can it produce flood-like situation in West Bengal? I will tell you, the flood depends on many factors. Since it is a dry season, summer season, most of the rivers are having very less water. Soil is also dry. The possibility of causing floods is not expected. But in certain urban areas like Kolkata or certain cities where you have got dense population, where drainage facility is not sufficient to drain out the water, you may have some kind of temporary inundation in low-lying areas. Sir, will it landfall at Sundarbans? Yes, we are telling that it will cross between Digha and Hatia, Digha of West Bengal and Hatia of Bangladesh, and near the Sundarbans. Chinmay Malik, sir, Odisha's which districts are most affected? We are expecting the north coastal districts, especially Balasore, Bhadrak, Kendrapada, and Jagatsinghpur to be affected. Balasore and Bhadrak will be nearer to the landfall point, and hence you can expect more compared to Kendrapada and Jagatsinghpur. So there is another question, why cyclones become more frequent in recent years? It is not true. Cyclones are not frequent in recent years. If you consider the data of more than 100 years, we find that frequency of cyclones has decreased over the Bay of Bengal. However, over the Arabian Sea, the frequency of the intense cyclones has increased. So there is another question, where will the cyclone move after landfall? So after landfall, it will continue to move north-northeastwards across Ganges to West Bengal and will enter into Bangladesh. Then it will gradually weaken. It will become a depression over West Assam or over North Bangladesh. There is another question. Can you please explain the term MJO? MJO stands for Madden-Julian Oscillation. In 1971 and 72, two scientists, Madden and Julian, came together and they found that near the equator, the convective clouds are showing some kind of oscillations. And there is some kind of periodicity in this oscillation, and it is traveling around the globe with a periodicity of about 30 to 60 days. So after that, people went on investigating and they found that it is not simply the convective clouds. There are many other parameters like winds and outgoing long wave radiations, etc., which also show this type of periodic oscillations. Now,
These Madden-Julian oscillations, it is a west-to-east propagating oscillation near the equator. And this oscillation leads to sometimes strengthening of wind, sometimes weakening of wind, and hence strengthening of a convective cloud, sometimes weakening of convective clouds. So when this oscillation passes through Bay of Bengal and Arabian Sea or adjoining Pacific Ocean, here convective clouds develops, which helps in formation of cyclones. Study shows the 60% of cyclogenesis is associated with favorable Madden-Julian oscillations. There is another question, sir. Tell about Kelvin wave. I missed the question. Okay, sir, what effect on Kolkata? Yes, if you look at our forecast, it is the landfall is over South and North 24 Pargana, and it is passing very close to Kolkata. Therefore, Kolkata will be affected by these tropical cyclones, and our prediction is that over Kolkata we will have rainfall and heavy rainfall, and also wind speed will be 110 to 120 kilometers per hour, gusting to 135 kilometers per hour. So there can be uprooting of trees, there can be bending and uprooting of electric poles and telephone lines also in Calcutta. There can be damage to slums, there can be damage to thatched houses and old structures also. So especially since it is a city, there will be many hoardings also. We should take care of hoardings. These hoardings will go as a projectile, and it helps the taxi, cars, etc. And also it helps the people also. Indirect damage also is caused because of all these projectiles. Okay, so when the super cyclone hit Paradeep, was it extremely severe like Amphan? It was more severe than Amphan when it was crossing Paradeep. It was a super cyclone, and it was the most intense cyclone in the history of cyclones over North Indian Ocean. What about Puri district? So in Puri district, we have the wind speed predicted as 55 to 65, gusting to 75 kmph. This is the squally wind. We do not expect much damage because of these winds. You can have some kind of breaking of tree branches sometimes, and small trees may be affected. We don't expect any major damage because of these winds. There is another question, sir, Bangladesh effect. Yes, Bangladesh also will be worst affected, especially the area which we are telling up to Hatia, there will be impact of the cyclones. For Bangladesh also, we are predicting very extremely severe impact because of this particular cyclone. There will be extremely heavy rainfall also over Bangladesh. It is extending 20 centimeter on 28th, and it may start on 19th in coastal areas. It will proceed towards northern parts. Also, we are expecting storm surge of about 4 to 6 meters height in the adjoining areas of Bangladesh, because that is also a low-lying area. We can expect 4 to 6 meter height of the storm surge or tidal wave above the astronomical tide. In addition, wind speed also will be, whatever wind speed we are predicting for West Bengal districts, that will be there in Bangladesh districts. So we will have the wind speed of 165 to 175, gusting to 185, gusting to 195 kmph, adjoining districts of Bangladesh. So then I am finding another question. I still cannot understand how 19 Odisha supercyclone remains stationary. So there are many factors which determine the movement of the cyclones. At that time, this cyclone was sandwiched between two anticyclones. So when that type of situation occurs, that area is called as col, C-O-L, where wind will be very light and variable. And these winds actually steer the cyclone. Since wind was very light and variable in the atmosphere because of the two anticyclones lying on two sides of the Odisha supercyclone, so this particular Odisha supercyclone remained almost stationary between Paradeep, Cuttack, and Bhubaneswar and caused devastation. Okay, why there are more cyclones in Bay of Bengal? I have replied already. Then, effect of Kelvin wave in cyclogenesis. Yes, Kelvin wave is also very important. If you consider this, it's a very technical question. It will not be applicable to everybody. So Kelvin wave is also very important. Kelvin wave is east-west propagating wave also. And we have got also a Rossby wave. So if you just consider these phenomena, all are linked with each other. In case of Amphan, we had the Rossby waves and Kelvin waves and also MJO. All these phenomena favor this intense convective activity and hence rapid intensification during past 24 hours leading to the supercyclone.
So is there any effect on Gopalpur coast? In Gopalpur also, that is Ganjam district, we are expecting wind speed of about 45 to 55. In coastalness, it can go up to 65 kmph. So it will not have any much damaging impact on that. But the entire sea over North Bay of Bengal, starting from Odisha coast to West Bengal, Bangladesh coast, will be very rough, high and phenomenal sea. Therefore, the fishermen should not venture into the sea. Those who are, they should immediately return to the coast. Okay. Sir, what is the, sir, how are the speed, how are the speed and path of cyclone predicted? So the speed and path of cyclone is predicted based on a standard operating procedure. As I told you, the tropical cyclone is just like a cork in the ocean. If you just throw a cork in the ocean, that cork will move as per the ocean current. Like this, in this atmosphere, if a cyclone develops, the cyclone will move as per the atmospheric current. And what is that atmospheric current? The atmospheric current is the mean wind structure in which cyclone is embedded. So whatever is the mean wind and direction of the atmosphere in which cyclone is embedded, that cyclone will move in that speed and in that direction. So to carry out that, we employ various types of numerical weather prediction models. We utilize all the latest tools and technologies to collect various observations like buoys, ships, radars, satellites, spectrometers. All these observations are coded and assimilated in numerical weather prediction models. You'll be happy to know that in a cyclone, we almost follow 10 types of numerical weather prediction models. So you may ask why. Just like doctors differ, models also differ because of various types of inputs in the models and computing power. So as a cyclone forecaster, we developed, with the help of a decision support system, a consensus forecast from the objective consensus derived from various numerical weather prediction models. And this objective consensus is modulated with a subjective consensus from the cyclone forecasters, utilizing their knowledge, experience, and expertise. I will just give an analogy. Just like a medical practitioner, doctors differ. But while taking a decision, so we go to different doctors if a very high category of illness, then we take a consensus decision and go for the treatment. Similarly, here also, we utilize all the objective tools for objective consensus, which is modulated with subjective consensus with knowledge, experience, and expertise through the video conferencing among the forecasters in India Meteorological Department. Okay. Funny, it is the second year, sir. Why this happens frequently? So if you just look at the frequency of cyclones over North Indian Ocean is about 5 in a year. And out of 5, 4 almost develop in the post-monsoon season, October to December. 1 develop during the pre-monsoon season, like April, May, June. So in that sense, it is climatological. It is normal that we should get at least 1 cyclone over the Bay of Bengal in the pre-monsoon season, especially during the monsoon onset phase, just like now. Because of the monsoon onset phase, there will be wind blowing from southern hemisphere towards the northern hemisphere, that is from southern Indian Ocean towards the northern Indian Ocean, and hence the Bay of Bengal. Now this strong wind which comes up, and sometimes if it is embedded with various types of waves, as I explained, like MJO, Rossby waves, Kelvin waves, so it leads to higher rotating power in this field. And certainly in the month of May, we have got the higher sea surface temperature. So therefore, it becomes favorable to become an intense cyclone or cyclogenesis. Again, there is a question that what is the height of storm surge expected? So we are expecting 4 to 6 meters of height in the south and north 24 Pargana districts, and 3 to 4 meter height in the east Midnapur districts. Similarly, 4 to 6 meter height of storm surge is also expected over adjoining Bangladesh districts. Okay. Then, is there any chance of recovery of the cyclone? Yes, the cyclone has already started, you can say, recovering. Earlier, it was moving northwestwards. Now, it is moving northwards nearly, and we are expecting that it will move north-northeastwards.
It is called as recurvature when the direction changes. So as I am telling that it will move northeastwards, that means it will recurve. Already the process of recurvature has started. So it will go to northeast, that means it will recurve and reach on 20th afternoon near West Bengal, Bangladesh coast. How much rain in Kolkata? We are expecting widespread rainfall activity over light to moderate rainfall over entire Kolkata region. But there can be heavy to very heavy rainfall in certain places in Kolkata district also. Was Cyclone not super cyclone? Yes, Cyclone was an extremely severe cyclone storm with wind speed of about 210 to 220 kilometers per hour. It was just a border case. It was not the super cyclone. But Cyclone was a very large scale system, and it affected the large area in Odisha and adjacent states. Okay, how much is there any chance? It is so fast I am not able to. What will be the wind speed in Kolkata? For Kolkata, we are expecting wind speed of 110 to 120 kilometers per hour, and occasionally it can go up to 135 kilometers per hour. This damaging wind can cause the uprooting of trees. It can cause the bending or uprooting of electric poles and telephone lines. It can have the devastating impact on the kacha houses, asbestos houses, tin houses, and old structures. What is the height of storm surge? I am telling again and again, height of storm surge will be about 4 to 6 meters in west and in south and north 24 Pargana districts. And since that area contains number of small rivers, the storm surge can go inside land up to 25 kilometers along the rivers, not in the entire area. Only low-lying area will be inundated by these storm surge. Can we, biodiversity, yes, it will affect the biodiversity of Sundarban. Just like Bulbul affected the biodiversity, it will also affect the biodiversity in Sundarban areas. Is it multimodal ensemble used by IMD? Yes, IMD has developed an indigenous multimodal ensemble. This is called as MME. It utilizes 5 best models. Based on that, and the past history of these models, we have developed some kind of multimodal regression. With the help of that, we get out a consensus track forecast or movement path forecast for next 5 days. And that is utilized for giving the path forecast of the tropical cyclones. However, this path sometimes modulated considering the present situation of observations. Any chance of landfall in Odisha? No chance. We don't expect any landfall over Odisha, but it will have the impact over north coastal Odisha. Indirect. So, sir, is multimodal ensemble? Yes, I have told this. Okay. Then what was the speed of Dhanushkondi? Yes, it was also an extremely severe cyclone storm, and wind speed was quite high, about 180 to 200 kilometers per hour as per estimate. But I will tell you, Rajan Saab, at that time there was no satellite, and we have got very limited satellite support, you can say, and radar was not there. So therefore, Doppler radar. So therefore, estimate at that time is very subjective. So